हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द यूट्यूब एजुकेशन। आज की इस वीडियो में हम एम.कॉम का सेमेस्टर 2 कॉस्ट अकाउंटिंग के जो सम्स हैं इंटीग्रेटेड अकाउंट के वो करने वाले, लेकिन ये सम करेंगे पेपर में से। लेटेस्ट जो पेपर्स है हमारे पास अभी 2019 और 18 अवेलेबल्स है। सो विल स्टार्ट विद द 2019 पेपर। सो हियर इज़ द पेपर। गुजरात यूनिवर्सिटी एम.कॉम सेमेस्टर 2 कॉस्ट अकाउंटिंग 1 का ये हमारा पेपर का सम है। चैप्टर्स हमको पहचानना है खाली। और अप्रैल 2019 फर्स्ट 14 मार्क्स का क्वेश्चन हमारे पास अवेलेबल होगा। ये ध्यान रखना है कि ये चैप्टर हमारे 14 मार्क्स का होगा। कौन सा? इंटीग्रेटेड अकाउंट। ये हम लास्ट पेपर्स चेकिंग है, उसमें पता चल जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन हमको आ रहे पूछे जा रहे लास्ट में। सो गौरंग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड ऑपरेट्स integrated accounting system. So here is given integrated accounting system. The following balances appear in the book as on 1st April 2018. Store ledger control account, it means all the balances are given here. Store ledger control account, work in progress account, and finished goods control account, bank account, fixed assets account, debtors, creditors, depreciation, profit and loss, share capital. All the balances are given. Debit balance, credit balance, both are given here. Now from this information and the additional information is given here. Transaction during the year transactions are given here 31st March 2019, whereas follows wages paid by check, wages are given. It means extra information is given there, we have to use that as an adjustments here. And you are required to prepare necessary ledger accounts. It means necessary accounts जो भी हो हमको सारे प्रिपेयर करने हैं, द इंटीग्रेटेड लेजर, एंड ऑल्सो प्रिपेयर द ट्रायल बैलेंस शीट एज ऑन 31st March 2019। और हमको लास्ट में एक अकाउंट्स बनाने के बाद ट्रायल बैलेंस भी बनाने की है। ट्रायल बैलेंस में जो जो बैलेंस हैं उनको हमको टैली भी करना है। सो ये हमारे इसका सम का जो काम है वो इतना रहेगा। पहले हम क्या करेंगे, नेसेसरी अकाउंट्स के बारे में इन्फॉर्मेशन मैंने ऑलरेडी के लेक्चर में, थियोरेटिकल लेक्चर में दे दी थी, इसलिए ज़रूरी है कि थियोरेटिकल फर्स्ट लेक्चर हमारा जो वीडियो है इसका वो देखना बहुत ही कंपलसरी है, क्योंकि उसमें जो इन्फॉर्मेशन होती है वो ही हमारे सम को ईजिली करने के लिए हेल्पफुल हो सकती है। अगर हमने वहाँ प्रॉब्लम की है, अगर हमने फर्स्ट वीडियो ही नहीं देखा और हम डायरेक्टली जंप करने जा रहे हैं सेकंड थर्ड वीडियो पर, सो सम में थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा, पूरा क्लियर कंसेप्ट होगा नहीं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पहले जो वीडियोस हैं उनको कंसेप्ट को क्लियर करेंगे, तब जाकर हम सम्स की तरफ जाएंगे। थियोरेटिकल पोर्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस बुक। ओके, सो let's start. Here all these accounts will be created, and some extra accounts as per in the information given last video we have to create here, and I have already created them. About 16 to 17 accounts are necessary. First is store ledger control account, work in progress account, finished goods account, cost of sales account. These four and compulsory, and इनसे जुड़े हुए हमारे पास एक्स्ट्रा 4 अकाउंट है, इंटीग्रेटेड अकाउंट्स हैं, wages, factory overhead, office overhead, selling and distribution overhead. 8 accounts are there. Now extra accounts, costing P&L, that is compulsory account, P&L account, that is compulsory. फिक्स एसेट्स इस इफ़ गिवन, यहाँ से अब हमारे कंपलसरी नहीं है, अगर दिया हो तो लिखने का, बट मोस्ट ऑफ द सम्स में फिक्स एसेट्स होगी ही। आफ्टर देन डेटर्स होंगे, क्रेडिटर्स होंगे, बिकॉज माल परचेज किया होगा माल एंड सेल किया होगा माल, वो भी क्रेडिट पर, तो दैट इज़ कंपलसरी। Share capital, if it is given then make, if it is not given don't create that. Provision for depreciation, if it is given then create that, otherwise no. And then cash and bank account, that is compulsory because somehow the expenses are paid by the cash or bank, so that is recorded in this account. And at last the trial balance sheet, if these accounts are prepared and some 1 or 2 accounts are left, then we can prepare here. So leave some space for these accounts. Now start करते हैं हम। फर्स्ट स्टोर ledger कंट्रोल अकाउंट,
पहले हम क्या करेंगे, बैलेंसेस जो हैं उनको बैलेंसेस को हम ट्रांसफ़र करेंगे, जो अकाउंट्स होते हैं उनके अंदर के जिन जिन अकाउंट्स का बैलेंस दिया है उन्हीं में ट्रांसफ़र करेंगे। जैसे कि स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट का बैलेंस है तो पहले बैलेंसेस लिख देते, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, लास्ट लाइन हमको लीव करनी है खाली, बाय बैलेंस कैरी डाउन, देन मेक टोटल। हियर ऑल्सो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, by balance carry down. You can write down BF and CF, brought forward and carried forward. So that is done. Here are no balances are given because ये इन्फॉर्मेशन हमको नहीं दी होती है. Expense account does not have any balances. Costing P&L and P&L account. P&L account has the balances. Credit balance. So by balance brought down. हमको एक एक करके सारे आइटम्स चेक कर लेने हैं, उसके बाद ही हमको सब करना है. इनमें एक्सपेंस में कोई भी बैलेंस नहीं होता, सो हमको उसके बारे में कुछ नहीं बनाना है. टू बैलेंस कैरी डाउन. Fixed assets are debit side, so balance brought down by balance carry down. Debtors assets, so debit balance to balance brought down by balance carry down. Creditors liability side, so by balance brought down, credit balance carry down. After then what? Share capital is there, so by balance brought down, credit balance will be there. Here debit, here credit. Provision for depreciation by balance brought down. Any of the provisions will have the credit balance. Done with this. Now what? Cash and bank, it may be debit or credit balance, but we have to check it. Bank account debit balance, so we can write down here to balance brought down by balance carry down. All the transactions will be recorded in between these limits. Okay, now what? Copy down all the balances. Store ledger control account. स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट, सबसे पहले हमारा फर्स्ट स्टेप अकाउंट्स बनाना था. सेकंड एंट्री हमको ये जो भी बैलेंसेस दिए हैं ट्रांसफर द बैलेंसेस टू द अकाउंट्स रेस्पेक्टिव अकाउंट्स. सो 50,000, वर्क इन प्रोग्रेस 70,000, फिनिश गुड्स 60,000, बैंक अकाउंट 80,000, फिक्स असेट्स 2 lakhs, debtors 60,000, creditors 45,000. You can see in your book also. Then depreciation provided, it means provision for depreciation 30,000. Profit and loss account 55,000. And share capital, that is 3,90,000. Done with this. डेबिट बैलेंस या तो डेबिट में लिखना है, क्रेडिट बैलेंस या तो क्रेडिट में लिखना है. ये हमको खास ध्यान रखना है और कोई गलती हमारे से यहाँ पर होनी चाहिए नहीं. जो भी बैलेंस यहाँ दिया हम उसको वहीं पर ही नोट डाउन करेंगे. नाउ अब बैलेंसेस के बाद में हमको क्या करना होता है कि रीड द एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन एंड गिव टू इफेक्ट्स ऑफ ईच द इन्फॉर्मेशन. सो जस्ट डू दैट. फर्स्ट wages are paid by check, and wages have two types, direct and indirect. We have already learned about that कि direct wages and indirect wages are written here. first of all, wages account debit to cash और बैंक अकाउंट. तो कैश और बैंक अकाउंट में क्रेडिट साइड लिखेंगे हम क्या लिखेंगे, wages account.
How much is there? 1,75,000. The total is written here. The total amount of the wages are written here, and in the wages account it is written to cash or bank account. It is written by check, so you can write on only bank account there. How much? 1,75,000. Now what? डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एब्सर्शन. तो डायरेक्ट का एब्सर्शन होता है हमारा कहाँ पर? WIP अकाउंट. एंड इनडायरेक्ट का हमारे पास कहाँ होगा? इनडायरेक्ट का हमारे पास कहाँ होगा? फैक्ट्री ओवरहेड अकाउंट. सो ये हमको माइंड में रखना है. अमाउंट कितनी है यहाँ लिखी हुई है? 150 एंड 25. डायरेक्ट इनडायरेक्ट. तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट. डायरेक्ट जाता है हमारा कहाँ पर? WIP में. और इनडायरेक्ट हमारा जाएगा कहाँ पर? फैक्ट्री ओवरहेड में. ये हमको माइंड में पिन अप कर लेना है क्योंकि हमारे लिए इम्पोर्टेंट है ये. और 25. तो अब इनकी भी फैक्ट हमको देनी पड़ेगी. WIP अकाउंट में यहाँ पर क्रेडिट है, तो WIP अकाउंट में क्या होगा? डेबिट साइड एक क्रेडिट तो दूसरा डेबिट होता है. ये रूल्स हमको भी याद रखना है. तो WIP अकाउंट ये रहा. यहाँ लिखेंगे हम क्या? डायरेक्ट वेजेस अकाउंट. ये क्या है? उसका एब्सर्प्शन है कि ये पैसे जो हमने खर्च किए, इतना पेमेंट किया, वो कहाँ से आएगा? वर्क इन प्रोग्रेस के वजह से हुआ, तो वहाँ से ही हमको एब्सर्व भी करना है. अब फैक्ट्री ओवरहेड में तो फैक्ट्री ओवरहेड इसके जस्ट नीचे ही है. क्या लिखेंगे हम? इनडायरेक्ट वेजेस. वेजेस जो है हमारे पास ये कैसा है? इनडायरेक्ट वेजेस है. इसके लिए ये यहाँ पर आएगा 25,000. ओके. इतना कंप्लीट हमारा फर्स्ट ट्रांजेक्शन जो किया था एडिशनल इन्फॉर्मेशन में, वो हमने यहाँ पर अभी कंप्लीट किया है ओनली. अब सेकंड की तरफ हम आगे बढ़ते हैं. परचेस ऑफ मटेरियल ऑन क्रेडिट. ब्रैकेट में लिखा हुआ क्रेडिट. परचेस ऑफ मटेरियल बट कैसा है? क्रेडिट. तो इसको हम कहाँ लिखेंगे? मटेरियल से रिलेटेड कुछ भी हो वो कहाँ आएगा? स्टोर लेजर में, क्योंकि मटेरियल आकर स्टोर करना पड़ता है. सो स्टोर लेजर हमारे पास उसका बनाया हुआ है ऑलरेडी. तो वहाँ पर आएगा मटेरियल परचेस. मटेरियल परचेस किया तो डेबिट साइड, और आउट हो मटेरियल जाए हमारे पास से कैसे भी तरह से हो क्रेडिट. आए तो उधार, जाए तो जमा. तो यहाँ लिखेंगे. और क्रेडिट पर लिया तो कौन देगा? क्रेडिटर्स. तो टू क्रेडिटर्स अकाउंट. क्या? मटेरियल purchase. How much? 2 lakh is there, so write down the 2 lakh. Here is first effect. Second effect will be creditors account. So by store ledger control account 2 lakh. After then what? Material issued for production. प्रोडक्शन के लिए इशू किया तो मटेरियल वहाँ से लेकर प्रोडक्शन का होता है, वर्क इन प्रोग्रेस होगा तब. So by WIP account, how much? 2,25,000. This will be taken here to what? To store ledger control account. 2,25,000. Now what? Next, material issued for factory maintenance. Factory maintenance तो फैक्ट्री ओवरहेड में जाएगा. So लिखेंगे by factory overhead account. How much? 5,000. फैक्ट्री मेंटेनेंस बोला तो फैक्ट्री ओवरहेड में भेजना हमको. तो फैक्ट्री मेंटेनेंस हमारे पास में कहाँ है? फैक्ट्री ओवरहेड ये रहा. क्या लिखेंगे हम? टू स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट, क्योंकि किस अकाउंट से आया है? ये हमको लेज़र पोस्टिंग हो रही है. एंट्रीज हमारे माइंड में लिख रहे हैं और उस माइंड में लिखी हुई एंट्रीज की हम पोस्टिंग कर रहे हैं. तो ये एक टिपिकल वर्क ही है हमारे लिए ऐसे तरफ. स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट कितना? 5,000 इज देयर. आफ्टर देन फैक्ट्री ओवरहेड पेड बाय चेक. तो फैक्ट्री ओवरहेड को पेमेंट किया चेक से. चेक यानी कि बैंक लिखना पड़ेगा. हाउ मच इज देयर? 1 lakh इज देयर, सो राइट डाउन द 1 lakh. हियर इज डेबिट. इन बैंक अकाउंट it will be credited by factory overhead account 1 lakh. Now what? Administrative overhead paid by check. ये भी यहीं पर आएगा. Administrative overhead. How much? 40,000. Then the next is selling overhead. वो भी हम यहाँ साथ में लिख देते हैं, बाद में इनकी इफेक्ट कर देंगे. सेलिंग ओवरहेड अकाउंट वो भी हमको दिया हुआ 30,000. इट मीन्स जो इन्फॉर्मेशन उनको यहाँ पे देते जाए उनको वैसे के वैसे लिखते जाएं, लेकिन ध्यान रखना है ड्यूअल इफेक्ट देनी है, सेकंड इफेक्ट भी देनी भूलनी नहीं है. अब ये यहाँ तक हो गया था ऑफिस और सेलिंग. तो ये लिखेंगे टू बैंक अकाउंट 40,000, टू बैंक अकाउंट 30,000, क्योंकि एक सेलिंग में था और एक एडमिनिस्ट्रेटिव था. तो एडमिनिस्ट्रेटिव यानी कि ऑफिस ओवरहेड
और सेलिंग एक्सपेंस का सेलिंग एक्सपेंस में हमको एक्सपेंस लिखना है तो लिख दिया। आफ्टर दैन व्हाट फैक्ट्री ओवरहेड रिकवरी की लिखा है तो यहाँ पर आता है कोई भी रिकवरी होगी तो इस साइड से होती है, जैसे यहाँ इसकी की वेजेस की, इन दोनों की तीनों की यहाँ पर होगी। वाई फैक्ट्री ओवरहेड की रिकवरी होती है उसके जस्ट पीछे वाले अकाउंट WIP में। कहाँ होती है? WIP में, तो लिखेंगे WIP अकाउंट। हाउ मच इज़ देयर? 1,60,000, so write down 1,60,000. After then what? डेप्रिसिएशन ऑन फैक्ट्री एसेट्स। तो डेप्रिसिएशन हमको जब भी काउंट करनी है तो वो कहाँ कहाँ पर आएगी? एक तो प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में आएगी और दूसरी डेप्रिसिएशन का आएगी फैक्ट्री ओवरहेड में आएगी। कहाँ आएगी? फैक्ट्री ओवरहेड। तो लिखेंगे डेप्रिसिएशन प्रोविज़न अकाउंट कितना है हमारे पास यहाँ? 20,000, तो राइट डाउन 20,000 ईयर। डेप्रिसिएशन में यहाँ पर कोई भी फिक्स असेट्स किया है, फैक्ट्री असेट्स है, कोई भी फैक्ट्री की कोई भी असेट्स पर अगर आता है तो कहाँ लिखा जाएगा? फैक्ट्री ओवरहेड में ही लिखा जाएगा। तो ईयर इज़ 20,000 और प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में लिखा जाएगा इस साइड बाय फैक्ट्री ओवरहेड अकाउंट डेप्रिसिएशन। हाउ मच इज़ देयर? 20,000। ना वॉट इनकम टैक्स पेड बाई चेक। तो इनकम टैक्स पेमेंट किया, पेमेंट कोई भी इस साइड आता है, जाए तो जमा, क्योंकि पैसे जा रहे हैं, इनकम टैक्स पेड किया है कितना? 40,000। और ये इनकम टैक्स के लिए कोई अकाउंट हमने ना बनाया नहीं है। जब भी इस तरह का अगर आता है तो उसको हम P&L अकाउंट में डेबिट साइड में लिख देंगे, क्योंकि ये हमारा एक एक्सपेंस है। तो लिखेंगे टू इनकम टैक्स। ओके, इतनी इन्फॉर्मेशन हमारी कंप्लीट हुई 1 बाय 1 करके। अब हमको थोड़ा आगे और चलना है। पेमेंट टू क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स को पेमेंट करना, तो पेमेंट को क्रेडिटर्स, तो यहाँ आएगा पेमेंट टू क्रेडिटर्स, लेंगे टू क्रेडिटर्स बाई क्रेडिटर्स अकाउंट। 2,25,000 we have paid. Here is the one effect, and second effect is will be creditors account में डेबिट साइड टू बैंक अकाउंट। कोई भी पेमेंट है करो तो उस साइड क्रेडिट, तो यहाँ पर क्या होगा? डेबिट। कितना अमाउंट है हमारे पास में? 2,25,000। रिसीव फ्रॉम डेटर्स, डेटर्स के पास से हमको पैसे मिले तो पैसे आएंगे इस साइड। क्या लिखेंगे? टू डेटर्स अकाउंट। कितना है हमारे पास अमाउंट? वी कैन सी हियर 6,50,000। सो 6,50,000 यू कैन सी इन योर बुक ऑल्सो। ओके, हियर इज डेबिट it will be credited to the debtors account by bank account 6,50,000। गुड्स फिनिश्ड, अब क्या लिखा हुआ नेक्स्ट? गुड्स फिनिश ड्यूरिंग द ईयर एट कॉस्ट। गुड्स फिनिश तो हमको कहाँ लिखना है? यहाँ से फिनिश गुड्स में ट्रांसफ़र करना है, तो बाय गुड्स गुड्स फिनिश्ड यानी कि फिनिश गुड्स अकाउंट। हाउ मच इज़ देयर फिनिश्ड गुड्स एट द ईयर? 5 lakhs, so write down 5 lakhs there. Second fact will be written here to what? To WIP account. Now what? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो दैट विल बी ट्रांसफर टू हियर। यहाँ पर से ट्रांसफ़र होगा, ये लिखेंगे क्या? कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट 5,40,000। हियर इट विल बी क्रेडिटेड, इट इज़ डेबिटेड टू दिस अकाउंट टू वॉट? टू फिनिश गुड्स। फिनिश गुड्स तैयार होकर हमको सेलिंग के लिए रेडी किया गया, उसकी कॉस्ट है 5,40,000। अब सेल्स भी किया तो सेल्स आ जाएगा यहाँ पर बाई सेल्स, एक्चुअली बाई सेल्स अकाउंट, लेकिन ये क्रेडिट है तो कहाँ आएगा? डेटर्स में, क्योंकि सेल्स किसको जाता है? क्रेडिट सेल्स डेटर्स को। तो कितना है हमारे पास में? 7 लाख। यहाँ पर क्रेडिट है, यहाँ पर क्या लिखा हमने? क्रेडिट लिखा है, तो उसको डेटर्स में किस साइड लिखा जाएगा? डेबिट साइड। क्या लिखेंगे? टू कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट। हाउ मच इज देयर? 7 लाख। येस और नो? our all the transactions has been completed now. Okay, what to do now? Keep aside your book and start closing your accounts. First of all, close these 4 accounts. It means wages, factory overhead, office admin and selling distribution. Close these accounts. 175, here also 175 you can check.
take a calculator in your hand and just start calculating. Now this side total 1 20 25 25 150 is there, so 10,000 remaining 10,000 will be transferred to costing P&L account. To what account? If in these accounts any differences arise, that is transferred to the costing P&L account. Total is 160. Now you can see the difference between 10,000 will be there. Here is 40,000. Here is 40,000. This 40,000 will be absorbed by the finished goods account. All the 40,000s are absorbed from the finished goods account. So here there was a credit account. Here will be debited what? 40,000 finished goods. To what? To office overhead absorption. Now next 30,000. So by cost of selling distribution will be there. Cost of sales. How much? 30,000. So these 30,000 will be written here. To what? Selling expense. Done. Now what? Just check it out. Close these accounts first of all and then do the next. 5 lakh, 2 lakh 50,000, 2 lakh 50,000 is there, and here is 2 lakh 30,000 total. So difference will be 20,000. Yeah. After then what? 70 plus 225 plus 150, it means 375. 375 plus 74 45, and here is 5 lakh. Four 45 is there, but difference should be this side because balance brought down is here, so balance should be this side. WIP account, we have observed everything or not? Direct wages are done. WIP account stall is at 225 is done. 150 is done. Finished goods 5 lakh is there. Yes. So what changes will be there? $160. The absorption is not written here. 160. One lakh 62 factory overhead account. This is not recorded absorption. Second effect was remaining of this 160,000. So write down that also. Now what? 6 lakh 5,000 is there, and the difference will be 1 lakh 5,000. So 6 lakh 5,000. Now make total of this. 5 lakh 6 lakh is there. Difference will be 60,000. Now the total of this side 7 lakh, so difference will be this side, and the difference of this account is transferred to the costing P&L account because this account does not have any balances. So the difference is 130 because 7 lakh minus 570. You can check here. 7 lakh minus 530, sorry 570. So 130 is there. So to what is? To costing P&L account. Here is debit. In costing P&L account it will be credited by cost of sales account. One more entry is remaining, 1,30,000. This entry here is debit, it will be credited in the cost of factory account, factory overhead account. How much? 10,000 only. Okay, now what? This is done, this is done. Okay, now
keep it for the last. Fixed overhead, there are no changes, no adjustments has been made in these accounts, so keep as it is. 2 lakhs, 2 lakhs, no changes will be made there. If any information is given about the purchase or sales of the fixed asset, then we have to make changes. 760, difference will be 760 minus 650, so 60,000, no, so difference is 1,10,000 of the debtors account. After then 245 is there, 20,000 will be there. नेक्स्ट व्हाट, वन बाई अकाउंट क्लोज करना हमको ध्यान रखना है. ये 390, देयर आर नो चेंजेस आर देयर, सो कीप इट इज as it is. 390, 390 is there. Now what, 50, 30 plus 20, okay, provision for depreciation. Now total of this account 850 plus 80, 730 is there. Now make the difference of this side, make total of this side. 175 plus 1 lakh plus 40 plus 70, 30, 30 plus 70 plus 40 plus 225. You can check in your calculator. 610 is there. 610 will be deducted from the 730. 120, 120 is the balance of cash account. Now total of these costing penal account will be closed. First 140,000, 140,000, difference is 1,40,000. Here is debited to P&L account, debit, this side credit by costing P&L account. 1,40,000, 140 plus 195 will be there. 195 minus 40, 155 will be there. So balances are obtained. Now just write down in these on these all the balances in the trial balance sheet one by one. So we will prepare a trial balance sheet. Start with these राउंड्स जहाँ जहाँ राउंड्स है हमारे पास में बैलेंसेस के, उन्हीं को देखना है. तो पहले स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट इज देयर, स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट. आफ्टर देन WIP अकाउंट, देन फिनिश गुड्स अकाउंट. After then what, costing panel no, P&L account yes. After then what, fixed assets yes, debtors creditors. Write down the names only first of all. Debtors account, creditors account, and then share capital is given, to share capital account. Provision for depreciation account and cash and बैंक अकाउंट. वन बाई वन अगर स्टेप बाय स्टेप अगर जाएंगे तो कोई मिस्टेक होने का चांसेस बिल्कुल भी नहीं है, यह भी ध्यान रखना है. अब जो इस साइड हमको दिख रहे हैं वो एक्चुअली डेबिट बैलेंसेस हमारे, जो बैलेंस इस साइड दिख रहे हैं वो हमारे क्या है, डेबिट बैलेंस है. तो 20, 105 एंड 60, 20, 105 and 60. After then which balances are, P&L account 155 is there, but that is credit. 155 credit balance है, so write down this side. Fixed assets 2 lakh 110, दोनों को साथ में लिखना है. डेटर्स 110, क्रेडिटर्स का बैलेंस हमारे पास है 20,000 ओनली.
Share capital 3,90,000, there are no changes. Debit side है तो उस side जाएगा 50,000 and 1,20,000 will be written in the debit. Now make total. Both the total should be equal. 20,000 plus 105,000 plus 60,000 plus 2 lakhs plus 1,10,000 plus 1,20,000. So you will get here 6,15,000. Now make total of other side. 1,55,000 plus 20,000 plus 390,000 plus 50,000. 615 is there. It means our both side balance debit and credit are equal. It means our sum is right. Okay, so this sum carries 14 marks. 14 marks for the examination, university examination. So we have to keep in mind each and every step, and then we can clear concept. Okay, if you have any query about this chapter, about this about this theory of this chapter, you can ask me anytime. Okay.